In this lecture, we'll study the delay in a logic gate. Basically, the delay in a logic gate, it simply means the time that the logic gate it takes to react from the instant the input is given to the instant it produces the output. So, for example, अगर हम simply एक AND gate consider करते हैं, तो this is your AND gate. I'm giving the input here, and on this side, I'm observing my output. So the time between the time instant when the output is observed and the time instant when the input was given is basically your delay. So कितना time आपकी गेट को react करने में लगता है in order to produce the output is simply what delay means. Okay, now we have to understand it with respect to the CMOS technology. So the delay in a logic gate, it is essentially it comprises of two parts. The first part is fixed and it is called as the parasitic delay, and the second part is called as the effort delay, F. Parasitic delay is it is inherent to the gate. जो गेट की कॉम्प्लेक्सिटी है, जो उसकी फैब्रिकेशन है, या जो उस पर हमने लोड दिया हुआ है, there is some inherent delay which that gate it produces, and it is called as the parasitic delay. It is fixed. It does not vary with the load. It does not vary with the capacitance or anything. No, it simply is something that is inherent to the gate, and it is called as parasitic delay, and it is denoted by P. Okay, another part, it is the effort delay. Effort delay, it is proportional to the load that the gate it drives, and it is denoted by the term F. Okay, so effort delay, it is characterized into two parts, the electrical effort and the logical effort. So overall क्या है हमारे पास, जो हमारा delay है, delay it has two parts. The first one is the parasitic delay P, जो क्या है fixed. It is due to the complexity, the fabrication of the gate. And the second one is H, जो हमने externally इस पे load रखा है, जो capacitance है, जो इसके input पे है, या जो इसके output पे जो capacitance है, that varies your sorry, this is not H, this is F, that varies the effort delay. Okay, that is F. Now effort delay, it is characterized into two parts, the electrical effort which is given by H and the logical effort which is given by G. Okay, so let's understand what the electrical effort H is and what the logical effort G is. Electrical effort is, it is due to the load capacitance. अगर मेरा कोई for example circuit मेरा it's something like this, okay, for example, तो इनपुट पे कितनी कैपेसिटेंस है और आउटपुट पे कितनी कैपेसिटेंस है, दैट रेशियो, द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस एट द आउटपुट टू द इनपुट, इट गिव्स यू द इलेक्ट्रिकल एफर्ट H. तो आउटपुट और इनपुट साइड पे जो लोड कैपेसिटेंसेस हैं उनका जो रेशियो है वो क्या हमें देता है, इलेक्ट्रिकल एफर्ट H. देन we have the second one which is called as the logical effort. This is a little bit complex to understand. Logical effort G क्या होता है? Logical effort is due to the properties of the logic gate. Okay, and this G, it is defined as the ratio of input capacitance the gate provides to the input capacitance of the inverter that can deliver the same amount of current. हमें यहाँ पे compare करना है, हमें यहाँ पर इस गेट को compare करना है with a standard inverter. तो जो इस गेट की input capacitance है और जो standard inverter की input capacitance होगी, उनका जो ratio है that is your logical effort G. और in other words हम लोग ये बोल सकते हैं, it tells us how much worse a gate is at providing an output current than an inverter given the input impedance of both is the same. Okay, अगर मेरे पास एक इन्वर्टर है, स्टैंडर्ड इन्वर्टर है और कोई और लॉजिक गेट है, सी ऐसे कंपैरिजन करते हैं, मेरे पास एक इन्वर्टर है और एक लॉजिक गेट है. ओके, ये कुछ करंट प्रोड्यूस कर रहा है और ये भी कुछ करंट प्रोड्यूस कर रहा है. कंपेयर टू द इन्वर्टर, ये करंट
how better it performs or how worse it performs compared to this inverter, given इनकी input impedance क्या है, सेम है. दैट कंपैरिजन इज बेसिकली योर लॉजिकल एफर्ट. तो लॉजिकल एफर्ट आपको क्या करके देता है, इट कंपेयर्स द टू. इट कंपेयर्स द current producing capability of a logic gate with that of a standard inverter. Okay, now this is your, this was your, what this was your effort delay. F is effort delay. Okay, F is effort delay, and it comprises of two parts, the logical effort G and the electrical effort H. And F, it is simply given as the multiplication of 2. G into H is your F. So the effort delay, it is the product of the logical effort and the electrical effort. So total delay can be written as, it was F plus P, where P was your parasitic delay. P तो आपका खैर fixed है, F it is equal to G into H. So अगर आपको total delay calculate करना होगा, you have to follow this formula, P plus G H. Okay, now here I have written the definition of G. Okay, now let's understand how we calculate this G. Let's take the example of an inverter. This is your inverter circuit. You know that width is twice, and here it is 1 for NMOS. That of PMOS, it is 2. You know why it is there? Because we have to do the appropriate sizing of the transistor in order to get the smooth output. Now, keeping this in view, I told you that G, it is equal to C in gate by C in inverter. That is the input capacitance of a particular gate with respect to the input capacitance of the inverter. Okay, now one thing that you need to notice over here is that the input capacitance of any gate, it is directly proportional to W by L ratio. So जितनी भी आपका W by L ratio होगा, जो भी आपने sizing की होगी ट्रांजिस्टर की, आपका C in का value क्या होगा, it will be scaled by that factor. So I can replace C in by W by L, keeping all the parameters कांस्टेंट. तो क्या मैं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि जो आपका इनपुट कैपेसिटेंस है, जो आपकी गेट सोर्स कैपेसिटेंस है, जो आपकी ड्रेन सोर्स कैपेसिटेंस है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W by L. So whatever happens to W by L, the same will be reflected in the input capacitance. So if I keep other factors in this input constant, so C in, I can easily say that it is equal to the aspect ratio, that is W by L. Okay, now what is the total capacitance? Here this is 2 and this is 1. So total that I am getting is 2 units plus 1 unit. It is equal to 3 units. Okay, fine. So the total capacitance, it is equal to 3 units. 2 of the PMOS and 1 of NMOS. Why मैंने 2 और 1 लिया? क्योंकि W by L ratio will be equal to your input capacitance for all other parameters जो क्या है इन दो के लिए constant. Okay, so inverter की जो input capacitance है, it is equal to 3 units. Okay, तो G जो होगा इसके लिए वो किसके बराबर होता है, it is C in by C inverter. इस वक्त आपका गेट क्या है, वो इन्वर्टर ही है, मतलब it is 3 units divided by 3, it is 1. So the logical effort G, it is equal to 1 for an inverter. Okay, now let's take the example of NAND gate. ये आपका NAND gate है. Okay, simply आपको देखना है, you have to calculate the logical effort. पहले हमने sizing of the transistor की है, sizing of the transistor हमने की है 2, 2, 2 and 2. We have done it earlier. You should be familiar with it by now. Okay, sizing of the transistors हमने किस तरीके से की है, so that पुल अप नेटवर्क की और पुल डाउन नेटवर्क की वर्स्ट केस के लिए जो W by L रेशियो हो वो क्या हो, वो सेम हो एज दैट ऑफ द इन्वर्टर. ओके, सो what is C in for input A? आपको एक इनपुट के लिए देखना है, आपको दो इनपुट्स के लिए नहीं देखना है. इनपुट A कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, इस 2 के साथ कनेक्टेड है
और यहाँ पर इस 2 के साथ कनेक्टेड है. सो द टोटल कैपेसिटेंस इज 2 + 2 विच इज़ इक्वल टू 4. ठीक है. सो सी इन लॉजिकल एफर्ट इज सी इन गेट बाय सी इन इन्वर्टर. इसका कितना हमारा सी इन निकला? इट इज़ इक्वल टू 4 फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट. आपको एक इनपुट के लिए देखना है. And for the inverter we have already calculated it as 3. So G it is equivalent to C in gate by C in inverter, which is equal to 4 by 3. Okay. So the logical effort for a NAND gate with 2 inputs, this is only for 2 inputs, it is equal to 4 by 3. Now, okay. Say 3 input NAND gate है हमारा. 3 इनपुट NAND गेट में भी हमें ऊपर वाले में क्या लानी है? वी हैव टू गेट इट इक्वल टू 2 एंड हेयर वी हैव टू गेट इट इक्वल टू 1. ओके. सो यहाँ पे हमने वर्स्ट केस के लिए लिया है. वर्स्ट केस हो गया जब एक ही होगा ऑन, तो एक ही को हमें क्या देना पड़ता है? 2. और यहाँ पर हमने क्या किया है? 1/3 + 1/3 + 1/3 विच इज़ इक्वल टू 3/3. इट इज़ इक्वल टू 1. तो साइजिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर्स हमने अकॉर्डिंगली की हुई है एज वॉज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. ओके. अब वी हैव टू सिंपली कैलकुलेट जी. जी किसके बराबर है? फॉर 1 इनपुट. एक इनपुट आपका फॉर एग्जांपल ए है, उसके लिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 3 है. 2 + 3 इट इज़ 5. एंड ऑलरेडी फॉर इसको हमें किसके साथ कंपेयर करना है? फॉर द सी इनपुट ऑफ द इन्वर्टर. वो हमने पहले ही कैलकुलेट किया. इट इज़ इक्वल टू 3. सो टोटल विल बी 5/3. तो जी इट इज़ इक्वल टू 5/3 फॉर 3 इनपुट NAND. ओके. सो फॉर 3 इनपुट NAND आपका G जो है इट इज़ इक्वल टू 5/3 as we have calculated here in this example. Okay. Now let's take the example of NOR gate. आपका 2 input NOR gate मैंने बनाया हुआ है. Sizing is simple. We have you know that. Now simply आपको क्या करना है? You have to calculate the ratio of C input for the gate for a particular input, and you have to take the ratio with respect to the input capacitance of the inverter. Inverter की हमने already पहले ही 3 calculate की हुई है. Okay. For C in for inverter it is equal to 3. Okay. तो इसके लिए कितनी होगी? एक इनपुट के लिए it is 4 और 1 that is 5. तो it is equal to 5/3. This is for 2 input NOR gate. Similarly you can calculate for 3 input, 4 input etc. Okay. And you will get this table. ओके. यहाँ पे मैंने गेट लिखा है. कौन सा है? इन्वर्टर, NAND एंड नॉर. इन्वर्टर में एक ही इनपुट होता है और उसके लिए जी हमने क्या कैलकुलेट किया? इट इज़ इक्वल टू 1. सो इन दिस टेबल यू गेट द वैल्यू ऑफ जी. ओके. दीज आर जी वैल्यूज विच आर रिटन इन द टेबल. नंबर ऑफ इनपुट्स अगर 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे. अगर NAND में हमारा 2 इनपुट है देन वी हैव कैलकुलेटेड इट एज 4/3. अगर NAND में हमारे 3 इनपुट्स है वी हैव कैलकुलेटेड इट एज 5/3. सिमिलरली हमने NOR के लिए भी कैलकुलेशंस की जो ऊपर मैंने की है. नाउ वी हैव टू राइट इट इन टैब्यूलर फॉर्म. NOR के लिए अगर we have 2 input we get 5/3. If we have 3 input you should get it 7/3. So a general formula that can be said that can be written for calculating the value of G is for NAND gate it is n plus 2/3 and for it is n plus 2/3. Okay. And for NOR gate it is 2n plus 1, 2n plus 1/3. Okay. Where n it is the number of inputs. So this table can be easily obtained or you can simply remember the formulas. Okay. Here and here. Now there is a question. We have to estimate the delay of fan out for 4 output inverter as shown in the figure. Okay. तो हमें किसका डिले निकालना है? ऑफ फैन आउट ऑफ 4 आउटपुट इन्वर्टर. मतलब हमें इस इन्वर्टर का जिस पे हमें क्या लगे हुए हैं? 4 आउटपुट इन्वर्टर्स लगे हुए हैं. हमें इसका क्या निकालना है? हमें इसका डिले कैलकुलेट करना है. ओके. सो हाउ डू वी डू इट? पहले हमें पता है डिले इट इज़ इक्वल टू GH प्लस P. P इज़ द पैरासिटिक डिले एंड G इट इज़ द logical effort, H it is the electrical effort. Okay. H you know it is also P has been given, it is equal to 1. Okay. So P we know P it is equal to 1. G और H हमें पता नहीं है, that we have to calculate. Okay. So simply पहले speaking we know what H it is equal to. H is C out by C in. Output capacitance by input capacitance. Okay. इसकी input capacitance for example is C. आउटपुट पे क्या लगे हुए हैं? आउटपुट पे आइडेंटिकल 4 इन्वर्टर्स लगे हैं. तो अगर एक की C है
यहाँ पर कितने हमें लगे हुए हैं, इस पे 4c लगा हुआ है। तो व्हाट इज h? h इट इज इक्वल टू c आउट बाय c इन। आउटपुट पे हमें क्या लगा है, 4c। इनपुट पे क्या लगा हुआ है हमारा c, 4c बाय c विच इज इक्वल टू 4। ओके, Similarly, G it is equivalent to C in gate by C in inverter. C in of the gate, किसका C in? Here and C in of the inverter. Gate इस वक्त आपका है कौन सा? It is inverter. उसका C in किसके बराबर? It is 3. So 3 by 3 it is equal to 1. और you can simply say कि G आपको पता है ये inverter के लिए it is equal to 1, जो हमने अभी ऊपर calculate भी किया. So delay it is equal to, you simply apply the formula and you will get it equal to 5 units of delay. Fine. Then this is another question. A 4 input NOR gate drives 10 identical gates. What is the delay in driving gate? तो आपको NOR gate में जो इनको ड्राइव कर रहा है, आपको उसमें आप अपना डिले कैलकुलेट करना है. सिमिलरली जैसे बिल्कुल हमने ऊपर ये किया है, यू विल फॉलो द सेम प्रोसीजर. आपको P इसमें अज्यूम किया हुआ है, इट इज़ इक्वल टू 4 NOR गेट के लिए. So G it is equal to 9 by 3. You can look it up from the table, or you can follow the formula 2n plus 1 by 3. इसमें input n कितने हैं, 4 हैं, तो 2 into 4 plus 1 by 3 that is equal to 9 by 3. आप simply formula से भी कर सकते हैं या आप टेबल भी कंसल्ट कर सकते हैं. ओके, सो आपने जी भी कैलकुलेट कर लिया. H इट इज़ इक्वल टू सी आउट बाय सी इन. आउटपुट पे कितने इसमें लगे हुए हैं गेट्स, 10 आइडेंटिकल लगे हुए हैं. तो इफ इनपुट कैपेसिटेंस इज C, आउटपुट विल बी 10C. सो H इट इज़ इक्वल टू 10. फॉलो द अबाउ गिवन प्रोसीजर, यूज़ द फार्मूला एंड यू विल गेट द आंसर. ये वाली फार्मूला में इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर एज 34 डिले यूनिट्स. ओके, now we have the last question for this lecture. Estimate the frequency of n-stage ring oscillator. Ring oscillator is made up of inverters like this. When a particular number of inverters, they are connected in a circle in a ring form, they form an oscillator which is called as a ring oscillator. Basically these inverters, they have to be connected in a closed loop. Okay, so the frequency formula, it is 1 by 2n into delay for each gate. So for each gate you have to calculate the delay. You know, for one stage you have to calculate, it is GH plus P. You know it is equal to 1, you have to assume it equal to 1. Okay, or maybe it is also given that P it is equal to 1. Then आपका G और H क्या है, H हो गया simply आपका C out by C in. C out, आउटपुट पे हर एक कोई भी अगर आप गेट लेंगे उसके आउटपुट पे एक ही गेट लगा हुआ है ना, एक ही, it drives only one gate. So C out will be C by C which is equivalent to 1. Fine. तो this is H will be equal to 1. G inverter के लिए क्या है, equal to, it is also equal to 1. So you substitute the values and you will get it equal to 1 by 4n. Okay, so you practice these problems and practice some other problems also from the book, and if there is any problem you can contact me.